students, welcome again in another episode of JEE Sprint 2.0. You are watching Vedantu and I am the master teacher of physics, Mohammed Shadab. My name is Mohammed Shadab. I am a mechanical engineering graduate, graduated in 2006. I have a 13 years of long intensive teaching experience to teach the student for IIT JEE, and I have mentored and taught more than 30,000 students and also produced more than 1,000 ranks. And here today I am going to discuss for JEE Sprint 2.0 a very important topic, that is magnetism. And before going to that magnetism, just see here that topic, that is magnetism we have, and here you have the Vedantu app, and with this Vedantu app you can resolve your doubts, you can study here, and you can also take the classroom here. So dear students, download from the Play Store, and this is the Vedantu app, your assistance for study or education. Okay, and apart of this, we have also here, you have to subscribe, like, share, so that other students can also get benefited from this sprint and this discussion. Right now, without any delay, I am going to start the magnetism. And dear students, here the first question is, so you can see this question is a very obvious question, but most of the students commit mistake here. So I intentionally took this question for you. So the question is, a proton of mass m and charge q. Yes, a proton of mass m and charge q is moving with velocity v in a magnetic field B. See here, mass m, charge q enters a magnetic field B with a velocity v at an angle theta with the direction of magnetic field B. So what we have to find? We just have to find the radius of curvature. Here most of the students should answer like this. But see here, the radius r is equal to mv upon qb if theta is equal to 90 degree. But if the case is, suppose this is the magnetic field B, right, and here the velocity makes an angle theta. Got it? Are you getting my point? The question is, magnetic field is B and the velocity of the particle, charge particle plus q charge particle, it has a plus q charge and mass is small m. So here we can say, now resolve the velocity. One is v sine theta here and another one is v cos theta, right? So there is no any magnetic force due to v cos theta. आप ये बात समझ पा रहे हैं? Means there is no magnetic force due to v cos theta. Only the component which is responsible for the magnetic force is v sine theta. So in this case, the radius is mv sine theta divided by qb. This is the radius of circular path. अगर ये इस सर्कुलर पाथ में डियर स्टूडेंट्स मूव कर पाता तो इस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होती? दैट रेडियस विल बी mv sin theta upon qb. एंड सी हियर देयर इज अ बी ऑप्शन. और जब भी ऐसा होता है कि आप मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं और वो मिल जाता है आपको ऑप्शन, तो आप खुशी से पागल हो जाते हैं और फिर यही आंसर दे देते हैं. बट दिस इज नॉट द आंसर. हियर वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट? सो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए आपको क्या करना होगा? आपको ये देखना पड़ेगा क्या ये रेडियस पॉसिबल है? नहीं, बिकॉज इट इज नॉट एट एंगल 90 डिग्री और नॉट परपेंडिकुलर. ये रेडियस पॉसिबल है? यस, दिस रेडियस इज, बट इफ द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल. अगर सर्कल में मूव कर रहा होता तब तो आप कहते हैं ये रेडियस है. बट व्हाट इज द केस? द केस हियर, v sin theta tries to move in circle. हमेशा ध्यान रखिएगा, whenever a charged particle tries to move inside a magnetic field, the magnetic field always wants to revolve that particle in a circle, and the
plane of that circle is always perpendicular to the magnetic field. So इस केस की बात हमने की और ये यहां नहीं था, तो इस केस को हम लोग यहां से रिमूव कर दिया. Now what's the case? The case is it will move by v sin theta in a circle and v cos theta. Due to v cos theta, it is still moving in forward direction. So if the magnetic field is in this direction, then it will move like this helical path. Right? Circle due to the magnetic field. सर्कल क्यों करेगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? वॉन्ट्स टू रिवॉल्व इन अ सर्कल एंड v cos थीटा आगे ले जाना चाहेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. सो ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन एंड द सर्कल एंड द स्ट्रेट लाइन मोशन इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल, द रिजल्टेंट मोशन इज लाइक दिस एंड दिस इज द हेलिकल. एंड हियर यू कैन सी, सपोज हियर इज द पार्टिकल, so the velocity of that particle is v. This is the net velocity, but the circle, you can see this circle and the radius of this is r, and that r is mv sin theta upon qb. So what is the radius of curvature? How can we find the radius of curvature? Radius of curvature के लिए you have to remember that centripetal acceleration, which is perpendicular, is equal to v square upon r. So radius of curvature we can say that is v square divided by a perpendicular. What's a here? Yes, a is acceleration. And if a is acceleration, so we have to find the acceleration in this case. In this case, the point is here, so acceleration is like this. And this acceleration is due to which force? That force is magnetic force. So, if the magnetic force F is equal to QVB sin theta. So, what is the acceleration? Acceleration is force divided by mass. So you can say QVB sin theta divided by mass. This is the acceleration. Right? And now we have to find radius of curvature. So how can we find radius of curvature? See here. For this radius of curvature, R is equal to v square. Acceleration that is perpendicular to that velocity, and that acceleration is qvb. See here, qvb sin theta divided by m, right? And v will be cancelled out here, so radius of curvature you will get is m v divided by qb sin theta. So this is a very good question. Solve it one or two more times and then you have answer r is equal to mv sin theta upon qb, and the answer is b. Mv sin theta upon qb is not the answer as we thought earlier. So what's the answer? The correct answer is C, that is mv upon qb sin theta. Got it? अच्छा लगा है? Very good, very conceptual question. So practice this question one more time. Now move to the next one. So we have another question like this, again for radius of curvature. So let's cover some theory part also here. Radius of curvature, how are we calculate the radius of curvature here? Here we have many radius of curvatures. Formula R is equal to mv sin theta upon qb if it is at an angle theta with respect to the magnetic field.
ओके, सपोज अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे नहीं है, परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, देन वी हैव अ वेरी सिंपल फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला इज R इज इक्वल टू mv अपॉन qb, राइट। और इसको हम किस अलग तरीके से लिख सकते हैं और किस दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, तो mv is also the linear momentum, so magnitude of linear momentum we can also write p divided by qb, another formula for the radius. Then again p, yes, you also know the relation between the p and kinetic energy. The kinetic energy k can be written as p square by 2m. From here we can say p is equal to under root 2m into k. K is the kinetic energy. So another formula that we can write for R, 2m k divided by q into b. Okay, one more thing, सोचिए और क्या हो सकता है। If the particle, charged particle is energized by any potential difference delta v, यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से एनर्जाइज किया गया हो, सो आप ये भी कह सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी के इज q into delta v. Delta v is the potential difference here. So another formula for the radius can be written as root of twice m q into delta v, that is the potential difference, divided by qb. Right? So ध्यान रखें स्टूडेंट्स, आपके पास इतने फॉर्मूले रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिखे जा सकते हैं और इन पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इन्हीं पर हमने 2-3 क्वेश्चंस लिए हैं जिनमें इन फॉर्मूले को यूज करके आंसर आसानी से निकल सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी हियर एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल having the same kinetic energy, point to be noted, kinetic energy का फॉर्मूला दिया गया, काइनेटिक एनर्जी की बात की है तो आप क्या करेंगे, यस, काइनेटिक एनर्जी की अगर बात की जा रही है तो हम काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला देखेंगे और काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला आपके पास यहां दिख रहा है। सो इन सभी फॉर्मूले को आप कॉपी में नोट करिएगा और इन फॉर्मूले से हम आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इन क्वेश्चंस को यहां से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। इन इक्वेशंस को, इन फॉर्मूले को हटाते हैं, जो हमारे काम का है उसको रखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी अपने काम का जो फॉर्मूला है, रेडियस इज इक्वल टू 2m, k is the kinetic energy and m is mass. So see here we have electron, we have proton, we have alpha particle. तो अब इलेक्ट्रॉन का मास तो m डैश बहुत 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 कम होगा, प्रोटॉन का मास अगर हम m लेंगे तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना लेंगे बच्चों, दैट इज 4m. व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज 2He4, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, यानी हीलियम से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन हटा दें तो हीलियम के न्यूक्लियस में क्या बचेगा, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन. So proton and neutron has approximately equal masses. So 2m and 2m means the mass is 4m. Right? Electronic charge is q. Protonic charge is also q. And alpha particle nucleus of helium कैसे मिला था? By removing the 2 electrons. So it has plus 2 charge. Right? So plus 2 charge means charge is 2q. So radius we can compare by mass and m. So for electron, here kinetic energy is same, 2 same, b same. So here we can say that radius is directly proportional to root of m divided by q. So for electron, that is root of m dash is very very small as compared to m, means as compared to the mass of
proton and alpha particle. So here Q for proton dear root m, right, divided by what is the charge Q, and for alpha particle, see here root of 4m, so you can write 2 root of m, and divided by charges, how much the charge, that is 2q. So when you put 2q here, 2 will be cancelled out, so r alpha you will get root m by q. Now radius of proton, radius of alpha particle is same, and due to very small mass, r is the very re, radius of electron is very small as compared to rp and r alpha. So where is the option? Re is minimum, and r alpha rp are equal, so rp and r alpha are equal. Now you can see here, dear students, re is smallest and rp and r alpha are equal, so this is the answer C. Got it? कितने लोगों से पहले मिल चुका है आंसर? ओके, वेरी गुड. सी हियर, सो अभी जो मैंने रेडियस की बात की ना, रेडियस के कितने फॉर्मूले हो सकते हैं? रेडियस का मोमेंटम के टर्म में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, पोटेंशियल के टर्म में, एनर्जी के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में, ये सारे फॉर्मूले आप याद रखें. इन फॉर्मूले पे डेफिनेटली जेईई मेंस में क्वेश्चंस किसी ना किसी तरह से घुमा के पूछा जाता है. सो इन क्वेश्चन पे आप फोकस जरूर करेंगे. ओके, चलिए आगे. फॉर द नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट्स, another question is also a very good question dear. See here, we have two coaxial coils. You can see the question is, two Helmholtz coil has a pair of loops each with n turns and radius is small r, and they are placed coaxially. Coaxially कैसे रखे हैं? Coaxially एक ऐसे रखा, फिर दूसरा इस तरह से रखा, यानी दोनों के एक्सिस सेम है, कॉन्साइड कर रहे हैं, एक ही एक्सिस पे रखे हुए हैं. सो डायग्राम कुछ अलग तरह का बना है. हम आपको और बेटर डायग्राम यहां पे दिखाते हैं. सपोज ये कोएक्सियल कॉइल है और ये भी एक कोएक्सियल कॉइल है, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट सेम, एंड हियर दिस इज द सेंटर, and if it is the center, the distance between the center is given as r, and you have to find the net magnetic field induction at point P, or the magnetic field at point P. So for point P, this distance is r by 2 and the radius is r, and some more information is here. N turns, r radius, so number of turns n, and current is I. So what is the magnetic field due to a coil on its axis? Magnetic field due to a coil on its axis, the formula is B is equal to mu naught, right, upon 2 n I radius square divided by radius square plus x square power 3 by 2. Got it? Okay. So r is the radius, x is the distance of the point on the axis from the center of the ring. Right? So this is the formula we have to use here for this P point. X is r by 2. And if the direction of magnetic field due to these two coils are same, so we have to add. If it is opposite, then we have to subtract. So first we have to find what is the magnetic field due to one coil. So for one coil, the magnetic field can be written as B is equal to mu naught divided by 2, number of turns n, current is I, r radius, that is square, divided by, and here r square plus r square by 4 power 3 by 2. Okay, right. So r square plus r square by 4 we have to add. Then
what we'll get, this is the same here, and here we get 4r square plus r square, 5r square divided by 4, 3 by 2. So here we can say mu naught divided by 2 n I r square, here 5 to the power 3 by 2, isn't it? Yes, 5 to the power 3 by 2 r square, so r cube, and here 4 can be written as 2 square, 2 square, then 2 square power 3 by 2, 2 will be cancelled out, 2 cube, and 2 cube means this is 8, और 8 upon डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, it will be 8. So r square we can cancel by this cube. So finally what we get mu naught upon 2, and here 8 n I square divided by 5 to the power 3 by 2 into r, right? And now we have to see the direction. So for the direction आपको पता होगा ये फॉर्मूला, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, सो लेफ्ट हैंड से दिस FBI, you can remember like this, Federal Bureau of Investigation, right? This is F stands for, right, force, B for magnetic field, right, I for current, direction of current or the direction of the motion of positive charge, right? पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में. इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज देन यू हैव टू टेक द रिवर्स ऑफ दैट मूवमेंट. इफ नेगेटिव चार्ज इज मूविंग लाइक दिस, so we have to consider that positive charge is moving like this. Okay, so FBI, yani whenever we have to find the force, direction of force, then we always use left hand, right? And whenever we have to find the magnetic field or the direction of magnetic field produced by the current carrying element or wire, then we always use right hand. Okay, याद रहेगा बच्चों? ठीक है, ध्यान से देखें. फॉर फोर्स ऑलवेज लेफ्ट हैंड, फॉर फील्ड ऑलवेज राइट हैंड. अब इसमें लिमिटेशन है, इसमें जरूरी भी है कि आप ये फोर्स करें, ये मैग्नेटिक, वो FB मैग्नेटिक फील्ड करें और इसको करंट करें. किसी को भी आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं. इट इज ऑलवेज फोर्स, इट इज ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड, इट इज ऑलवेज करंट और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. बट इन for the direction of magnetic field, if we use right hand, we always use right hand for the direction of magnetic field. यानी magnetic field के लिए हमें right hand को use करना, और कैसे? इस direction में. If this is the direction of current, so this is the direction of magnetic field, and if this is the direction of current, then this is the direction of magnetic field. आप इसको ऐसे कर्ल करें, ध्यान दें, ऐसे कर्ल करेंगे. इस डायरेक्शन में अगर करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी. इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ले लिया तो यहां करंट हो जाएगी. यानी बोथ आर इंटरचेंजेबल, हमेशा इंटरचेंजेबल रहेंगे. और इन सब चीजों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सारे फॉर्मूले वेक्टर फॉर्म में याद रखते हैं. जैसे QVB sin थीटा को QVB sin थीटा ना याद करके QV क्रॉस भी याद रखें, IL क्रॉस भी याद रखें, टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस भी याद रखें. सो ऑलवेज रिमेंबर एंड प्रैक्टिस द फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म. अगर वेक्टर फॉर्म में है एंड यू आर अवेयर ऑफ A क्रॉस B, ऑब्वियसली यू आर अवेयर ऑफ, इफ यू आर अवेयर ऑफ A क्रॉस B, तो कभी भी आपको ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो डायरेक्टली आप वहां से फॉर्मूले से क्रॉस प्रोडक्ट से A क्रॉस B करके आंसर निकाल सकते हैं. राइट, चलिए आगे चलते हैं. तो आपको यहां इससे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के लिए ध्यान से देखें जरा. से दिस डायरेक्शन ऑफ करंट मींस करंट इज मूविंग लाइक दिस, ऐसे यहां से ऐसे जा रही है.
अब हमें करंट अगर ऐसे जा रही है तो इसको देखने के लिए आप ऐसे देखेंगे करंट की डायरेक्शन. Current is moving like this, direction of current like this, so the magnetic field is along negative x-axis. So इसकी वजह से जो magnetic field है वो इस डायरेक्शन में है जिसको हम लोग B कह रहे हैं, राइट? और फिर अगर हम इसके लिए देखें तो यहां से भी सेम डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे जा रही है. अगर सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है तो फिर से आप राइट हैंड को ऐसे रखेंगे, इधर इस पॉइंट पे आपको देखना है तो आप थंब को इधर पॉइंटेड करेंगे. Then you'll get the answer or the direction of B for this field is also negative x direction. So we have both the magnetic field in same direction. So the net magnetic field is the addition of these two. And one magnetic field, all are symmetric, all the distances are r by 2, r current or same. So we have this one. Also for this and this, and if they are in same direction then we have to add. When we add these, so we have to multiply it by 2. If we multiply it by 2, then what we have here? See the answer, see the options. Answer is this one. Net magnetic field is this into 2, because दो मैग्नेटिक फील्ड हैं सेम और वो सेम डायरेक्शन में हैं, इस वजह से हमने इनको ऐड किया है. पा रहे हैं? यस, वेरी गुड. सो मल्टीप्लाइड बाय 2 करने के बाद ये आपको आंसर मिलता है. सो इस क्वेश्चंस का, इन तरह के क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है और इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है. गॉट इट? चलिए आगे बढ़ें. यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? पहुंच गए होंगे? वेरी गुड. So nice. And for the next question, see here, another very good, very conceptual question. See here, this is a very good question. और इस तरह का क्वेश्चन किसी ना किसी तरह से घुमा के पूछा जरूर जाता है, तो इस क्वेश्चन पे भी हम लोग अच्छे से फोकस करेंगे. Got it? So see here, what we have to find. The question is, a charge Q is spread uniformly over an insulated loop of radius r if the loop is rotated with an angular velocity of omega. Yeah, this is the right way to do the question. First, mark each and every information that you have. Radius r, loop, charge q, angular velocity omega with respect to normal axis, then the magnetic moment of the loop. तो अभी हम इसको कन्वेंशनल मेथड से करते हैं, फिर इस तरह के क्वेश्चंस का हम आपको एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी बताएंगे. वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट. सो यू नो द मैग्नेटिक मोमेंट m is actually n I a. n is the number of turn, I is the current flowing and a is the area of the loop. So यहां करंट कैसे फ्लो हो रही है? How the current is flowing? But there is a charge only. So here there is a loop and this is the center and some positive charge is spread over here like this, and this charge is spread uniformly as the question says here. This charge is spread on this insulated ring uniformly and it is rotated about its axis with angular velocity omega. And what is the current? Current is rate of flow of charge. Flow of charge is the current, na? Yes. Rate of flow of charge is current. If this ring is rotating with angular velocity omega, it means that charge present over here is also revolving. So that is the flow of charge. And if the flow of charge, that means current is there. If current is there, so it will behave like a current carrying coil. But what is the current? As you know, current I is equal to Q by T. So for one revolution, the time takes, it will take the time capital T, and T, you know, omega is equal to 2 pi by capital T. So for T, you can say that is 2 pi by omega. And if it is 2 pi by omega, then what we can say? We can put value here, and here we can say I is equal to Q by
2 pi into omega. Now we have current I is equal to q omega divided by 2 pi. Right? This is our current. And magnetic moment, the magnetic moment what we have? Magnetic moment that we have, M is equal to, there are only one number of turns, so N is equal to 1, I is equal to Q omega divided by 2 pi, right? And multiplied by A. What is A? A is the circular loop, radius is supposed to be R, so area is pi R square. This pi will be cancelled out. So magnetic moment that we have, Q omega R square by 2. Right? Now we have very easy going question, and that option is half Q omega R square. So the correct option is B, and the magnetic moment, what the question asks? Magnetic moment of the loop is half Q omega R square. So dear students, always remember, इस तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें कहीं रॉड के, ऐसा भी हो सकता है, ये भी कहें देयर इज अ रॉड, देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस आर हियर, present are here, and rod is rotating about midpoint or about the end, or there is a disk, number of question. तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा चीज यूज करना है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी, और उससे इससे आसानी से आंसर आ सकता है. तो देखिए वो क्या है. आई थिंक ये वाला फंडा आपको क्लियर हो गया होगा, ये लॉजिक भी समझ में आ गया होगा, आई क्या समझ में आ गया होगा, चार्ज मूव करता है उससे करंट कैसे है, ये भी आपको समझ में आ गई होगी. ओके, सो अगर ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, सो कैन आई रिमूव दिस? यस, बिल्कुल. सो इसको यहां से हटाते हुए अब हम आपको दूसरा पार्ट बताते हैं इसका, कि और किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते थे. आंसर आपको आ चुका है, और अब आपके लिए ध्यान से देखें, इस बात को हमेशा याद रखना है, द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड द मैग्नेटिक मोमेंट. सी हियर, M is the magnetic moment, right? L is the angular momentum for any body, any object. And the ratio is always total charge divided by mass 2m. Q is the total charge on the body, on the object, जैसे यहां पर था, और 2m is the mass. If you have to find magnetic moment, then magnetic moment is Q divided by 2m into L. L is the angular momentum. See, इस चीज से हम इस तरह के सभी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं. देखिए इसमें कैसे होगा. मैग्नेटिक मोमेंट हमको पता करना है. व्हाट इज द टोटल चार्ज स्प्रेड ओवर? दैट टोटल चार्ज इज Q. व्हाट इज द मास? मास इज सपोज m, so this is 2m. L, what's L here? L is the angular momentum. So angular momentum of this loop, if it is rotating with velocity, angular velocity omega, so angular momentum L is equal to I omega. And if it is L is equal to I omega, then you can see I is equal to m R square for the ring into omega, that is mr square omega. So L is mr square omega. अगर डिस्क होती देन mr square by 2, और कोई बॉडी होती तो अकॉर्डिंगली हम उसका एंगुलर मोमेंटम ले लेते जिस पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व किया जा रहा है. सो नाउ इफ यू रिप्लेस दिस हियर इन प्लेस ऑफ L here, so we have m r square omega, so m will be cancelled out and we have m is equal to q r square omega divided by 2. तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस तरह से, इस लॉजिक से आसानी से हो जाएंगे, तो इस लॉजिक को याद रखिएगा. कई सारे क्वेश्चन होंगे. रॉड पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है,
डिस्क हो सकती है, उसकी सरफेस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का हो सकता है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर हो सकता है जिसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएगा, एंड देन द क्वेश्चन विल आस्क दैट व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस बॉडी. सो द सिंपलेस्ट मेथड m is equal to q by 2m into L. गॉट इट? चलिए यहां तक आप पहुंच गए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Another very good question. Just you have to identify the path. That very easy question also. Here, magnetic field B naught J cap. So, B naught is here, value is B naught, and this is X. See, Z, 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 X. So, X इधर है, डायग्राम में देख लेते हैं. And if this is supposed to be Z, right, plus Z axis, so where should be Y? Y को देखने के लिए we have orientation, axis orientation, X cross Y should be equal to Z. So this is X, and if this is Z, so X cross Y means positive Y is perpendicular inward, right? Negative Y is perpendicular outward. So now see the question. B naught J cap, where A to 2A. Where is the region A to 2A? A to 2A. In which direction magnetic field? Magnetic field is positive. So positive Y axis is here. So here the magnetic field is like this. In this region. Then after minus B naught J cap. And minus B naught J cap is where? Minus B naught J cap is in the region 2A to 3A. Means 2A से 3A तक का जो रीजन है, सी हियर 2A to 3A, एंड यहां माइनस y एक्सिस डायरेक्शन है. सो माइनस y एक्सिस डायरेक्शन इज शोन बाय द डॉट एंड विच इज आउटवर्ड. सो द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, मीन्स डॉटेड फॉर्म, राइट? दिस मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड. See, now positive charge, point to be noted, positive point charge moving with a velocity I cap, यानी positive point charge यहां से एंटर करेगा और उसकी वेलोसिटी है v नॉट. क्लियर? अब यहां से एंटर करके जाएगा तो आप सबसे पहले देखो, जैसे ही इसमें एंटर करेगा, वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? Positive charge FBI, FB, B is inward, and this is the direction of velocity of the positive charge. Direction of velocity of the positive charge. This is magnetic field inward, positive charge direction, force is upward. So if there is a force, so it will move like this, right? यहां तक पहुंचने के बाद, after reaching the point, what is the point here? This point is 2A. Now the magnetic field is upward direction. So now the force, direction of force changes, and if it has a velocity here and magnetic field like this, velocity is like this, so what is the direction of force? Here, right? And from here, if the force is like this, then it will move like this. So, how is the path? The path is, yes, option A. It will move first like this, then due to the change in direction of force, due to the change in direction of magnetic field, the path is like this. So, the correct option is A. कुछ नहीं करना था, only what you have to do, you just have to focus on the direction of force by Fleming's left hand rule, right? ये तो याद ही होगा. CID कुछ तो गड़बड़ है, या SP प्रद्युमन
कुछ तो गड़बड़ है। तो उस तरह से इसको हम याद रखेंगे और ये फोर्स के लिए हमेशा यूज होता है। और देखिए आपने इसको यूज करके कितनी आसानी से गॉट द आंसर, राइट? ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। अनदर वेरी गुड क्वेश्चन फॉर द सेम कंसेप्ट, इसी को यूज करना है। बस ध्यान रखिएगा यहां पे गलत ऑप्शन भी आपको दिए होते हैं, यही मजा है IIT JEE का। IIT JEE में ऑप्शन ऐसे रैंडमली नहीं उठाए जाते हैं। Whenever you will make mistake, whenever you have misconception, whenever you thought another thought, if you have something like this, the option is according to these misconceptions. And when you'll get the answer or the option, you are more than happy and take that incorrect one. Okay? So, be clear. Your concept should be crystal clear. आपके जो भी कंसेप्ट हैं बहुत 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 ज्यादा क्लियर होने चाहिए और ये कंसेप्ट आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने से होंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है, थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी इसलिए पढ़नी है क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। योर प्राइम टारगेट इज टू सॉल्व मोर एंड मोर एंड मोर गुड क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करके ही हमको पता लगता है कि कहां पर हमें प्रॉब्लम आ रही है और किस एरिया वीक में हम वीक हैं, कहां पर हमें ज्यादा फोकस करना है। चलिए, यहां another direction of magnetic field is here and charge is negative, velocity is like this. You just have to find the direction of motion and final speed. So final speed के लिए तो आपको पता होगा magnetic field या magnetic force work done by magnetic force is always zero. Because the direction of force is always perpendicular to the direction of velocity or the displacement. And the work done is F dot ds. F dot ds यानी F ds cos theta. And cos theta में theta 90. Then cos 90 0. That's why work done is 0. So if there is no work done, so there is no change in kinetic energy. यानी kinetic energy में भी कोई चेंज नहीं है, यानी स्पीड जो पहले थी वही रहेगी। वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी मैग्नेटिक फील्ड में, लीनियर मोमेंटम चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड में, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। इस बात को दिमाग में बैठा के रखना है। ओके, तो यहां पर आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। एक चीज तो आपको यहां नेगेटिव चार्ज दिया है, नेगेटिव चार्ज में हम जैसे फोर्स निकालते हैं जस्ट उसको रिवर्स कर दो या उसकी वेलोसिटी रिवर्स कर दो। दोनों चीजें एक साथ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या करना है, नेगेटिव चार्ज है, आप उसको पॉजिटिव मान के फोर्स की डायरेक्शन निकाल लो और जस्ट रिवर्स कर दो। ओके, या फिर ऐसा करो कि अगर आपको नेगेटिव चार्ज दिया है तो जो उसकी वेलोसिटी दी है आप उसके रिवर्स वेलोसिटी ले लो। दोनों बातें एक साथ मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए? ओके, चलिए, तो यहां से जैसे ये एंटर करेगा फिर आपने वो CRD वाला रूल ऐसे पकड़ा FBI, और फिर FBI में आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड इधर और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यानी आपको फोर्स कहां मिल रहा होगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड। अब आप क्या सोच रहे होगे, अपवर्ड फोर्स है और ऐसे चला जाएगा। जैसे ही आपने ऐसा किया गड़बड़ हो गया। क्यों? यस, नेगेटिव चार्ज है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपको क्या करना है, आपको नेगेटिव चार्ज में फोर्स ऐसे आ रहा था तो आप उसको उल्टा मान लो, या आप इस वेलोसिटी को उल्टा कर दो। ऐसे जैसे ही आप इस वेलोसिटी को उल्टा करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने आप फोर्स इधर आ जाएगा। दोनों मत कर देना, वेलोसिटी भी उल्टी कर दी, फोर्स भी उल्टा कर दिया, फिर वहीं पहुंच गए। ऐसे नहीं करना है, या तो वेलोसिटी रिवर्स करो या फाइनल फोर्स रिवर्स करो, और उससे पता चला फोर्स इधर नीचे आएगा तो ये इस डायरेक्शन में बेंड होगा, यानी नेगेटिव y एक्सिस में जाएगा और स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। सो व्हाट आर द ऑप्शंस, v इंक्रीज होगी, इक्वल रहेगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव होगी, ये तो हो ही गया गलत। v इक्वल होगी, अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव होगा, गंदी बात। v ग्रेटर देन u, बहुत गंदी बात। v इज इक्वल टू u, बहुत अच्छी बात। y इज लेस देन 0 मींस नेगेटिव में जा रहा है। दैट इज द आंसर, इट शुड बी लाइक दिस, यानी ये v u इक्वल होगा, स्पीड में कोई चेंज नहीं, और ये नेगेटिव में जाएगा, एंड दिस शुड बी द आंसर। Got it? Very good. चलिए आगे बढ़ते हैं। Another question. Very good question.
कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यहां ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपको हर एक कंसेप्ट सिखाते जा रहे होंगे, और कोशिश की है कि एंटायर सिलेबस, एंटायर मैग्नेटिज्म का हर एक टॉपिक कवर हो जाए। हो सकता है कुछ एक दो टॉपिक, क्योंकि टाइम भी कंस्ट्रेंट है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। सी हियर, पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q, कांस्टेंट वेलोसिटी v, along positive x direction enters region containing magnetic field directed along negative z direction। तो जैसा कह रहा है वैसा बना लेते हैं। पहले तो हम लोगों ने एक्सिस बनाया, वेरी नाइस। दिस इज ऑरिजिन, हियर पॉजिटिव x, यहां क्या किया बच्चों, पॉजिटिव y, दैट्स वेरी नाइस। वेयर इज द z? या z इज inward direction, extending from A to B. This distance is suppose A and this distance is suppose B, and magnetic field is present only in that region. Which region? A to B means distance B minus A. And what's the direction of magnetic field? You can see here, extending from A to B, the minimum value of V required so that the particle can just enter the region X greater than V। यानी यहां पर आपको पार्टिकल को लानी है, यहां लाना चाहते हैं। And the direction of magnetic field be directed along the negative Z direction। Where is the negative Z direction? X cross Y, positive Z is here, negative Z is inward direction, so the magnetic field is like this। And if here is the magnetic field and the charge is positive or negative, पहले आप ये भी देखो, where is the charge? Charge is plus Q given here। If charge enter from here, then it will move like this। Okay, अब अगर इसको यहां पहुंचना है, द क्वेश्चन इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ V रिक्वायर्ड सो दैट द पार्टिकल कैन जस्ट एंटर द रीजन X ग्रेटर देन B, यानी X ग्रेटर देन B यहां जाना चाहता है। अगर ऐसा हुआ कि इसका सर्किल इधर बन गया, तो ये क्या करेगा, यहां से ऐसे निकल आएगा, और अगर जस्ट इसकी रेडियस B माइनस ए हुई, जस्ट B माइनस ए के इक्वल हुई, तो ये बाउंड्री कंडीशन में होगा। हमसे मिनिमम पूछा गया है, तो हम लोग बाउंड्री कंडीशन लेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, R इज इक्वल टू mv अपॉन QB। What should be the R? Should be this length. What is that length? Is B minus A. So this is B minus A is equal to mv upon QB. So what is the answer here, dear? So the answer is V, minimum V, Q, B, and this is B minus A divided by M. This is the answer. So do we have? Yes, somewhere here, B, Q, B minus A into B, right? If the velocity is less than this value, then it will move like this. If it is greater than this, then it will move like this. Okay, so this is also a very good question for the revision. Now another question is also a conceptual one. You have to calculate two identical wires A and B, each of length L carry the same current I. Wire A bent into a circle, सर्कल में किसको, A को, रेडियस R, and wire B bent into the form of square of side A, BA and B the values of the magnetic field at the center. So I think circle के लिए you don't have any issue, A is the circle. So if there is a circle, then the magnetic field which is BA is equal to mu naught upon 2 I upon R, but we don't have R. But for R we have the circumference 2 pi R
is equal to L, because the length of wire is L. And now when we bend, then L becomes 2 pi r. From here, r is equal to L upon 2 pi. Now we can put value of r here. So BA that we have, mu naught upon 2 I, and this is L, right? Upon 2 pi, so this is 2 pi. So BA is equal to mu naught pi I upon L. This is the value of BA, right? We have the magnetic field of circle. Now we have to find the magnetic field due to a square loop. So suppose we have this square loop and the center is here, and at the center we have to find magnetic field. For the magnetic field, what we'll do, just join this, and this is the current I here, current I again, and again here is the current I. So यहां पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, एक सेक्शन एक वायर की वजह से पहले कैलकुलेट करेंगे. एक वायर के लिए व्हाट यू हैव द फॉर्मूला फॉर द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर फॉर द मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. या आई एम राइटिंग हियर दैट फॉर्मूला इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I divided by R, and here sine alpha plus sine beta. What are alpha? This is alpha and this is beta. For this case, alpha is 90 degree and beta is also 90 degree. If alpha beta, sorry, not 90, 45 degree. If alpha is 45 degree and beta is 45 degree, then sine alpha plus sine beta means 1 by root 2 plus 1 by root 2. Now we calculate here B, magnetic field due to single wire. इतने वायर की अभी देख रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I. What's R here? That is A by 2, and sine alpha plus sine beta 1 by root 2 plus 1 by root 2, that means 2 by root 2, and if it is 2 by root 2, then we can say 2 by root 2. If 2 goes here, then 2 into 2 4, and then 4 will be cancelled. B is equal to mu naught upon pi I divided by root 2A. Got it? If this B is the magnetic field due to one only, एक वायर की वजह से है, टोटल अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो 1 2 3 4 सबको ऐड क्यों करेंगे? बिकॉज ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, ड्यू टू दिस वायर इनवर्ड, ड्यू टू दिस वायर is also inward, due to this wire is also inward. When all the 4 magnetic fields are inward, then we should add them and all are equal. So the net magnetic field due to B is 4 times of this, yani 4 into mu naught by pi divided by I by root 2A, right? This is 4 mu naught I divided by root 2. So this is the formula for this one. But here we have A. So what we have to do? We have to find the A in terms of L, because L here. So L is equal to actually 4A. So A is equal to L by 4. So put value of A here. So B of B is equal to L by 4. So L 4 into 4 16 mu naught I divided by pi root 2 L. This is the magnetic field due to a square. And now what we have to find?
Just we have to find BA upon BB. So BA upon BB, when we put the value, we get the answer pi square by something. Okay? बाकी कैलकुलेशन हम आप पे छोड़ रहे हैं, आपको जस्ट रेशियो निकालना है. मेन कंसेप्ट आई टोल्ड हियर एंड रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन यू कैन डू. वी शुड सेव द टाइम. ग्राफ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, वेरी इजी क्वेश्चन. आप सिर्फ देख के कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है. द क्वेश्चन इज इनफाइनाइटली लॉन्ग hollow, infinitely long hollow conducting cylinder, inner radius and outer radius. तो अगर आप देखोगे कि इसके पास इस तरह से hollow है, current is only here, this is inner radius and this one is outer radius. So the magnetic field, concentrate on Ampere circular law. ये सेंटर है. When we make a loop, Ampere circular loop is here, there is no current. Ampere circular loop is here, there is no current. Ampere circular loop is here, there is no current. If there is no current, means there is no magnetic field till this. So this cannot be the answer. This or this can be the answer. But when we reach up to this point, the magnetic field is still zero. यहां तक जीरो होगी. जैसे ही इसके ऊपर चलेंगे, यहां से एम्पियर लूप जैसे इस पॉइंट को पार करेगा, अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी सी जीरो से इंक्रीज होगी. कहां से इंक्रीज होगी? पॉइंट टू बी नोटेड, जीरो से इंक्रीज होगी. और अगर जीरो से इंक्रीज होगी तो ये एकदम से जंप कर गया, एकदम से जंप कर गया, पॉसिबल नहीं है. जीरो से इंक्रीज होता है r/2 से, यानी r/2 जो ra कहा गया है, दैट इज एक्चुअली r/2, और यहां से जीरो से इंक्रीज करेगा. सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन. देन इंक्रीजेस एंड देन फ्रॉम हियर टू हियर करंट ऑल्सो इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस. आफ्टर दैट ओनली द रेडियस ऑफ द लूप इंक्रीजेस, नॉट द करंट. That's why the magnetic field is decreasing. Got it? So it's a very easy and simple question. Let's move to the next one, dear. Yes, this is a very good question. जुगाड़ टेक्नोलॉजी से भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है. What is the question actually? Long straight wire along the Z axis. So जैसे ही आपसे कहा, आप इसको ऐसे करें, यहां पर पॉइंट बनाएं, और फिर Z axis carries a current I in negative Z direction. There is a wire and carries current in negative H direction. Yeah? A straight wire along Z axis carries current I negative Z direction. The magnetic vector field B at a point having coordinates X, Y. So, here, suppose there is a point, coordinates X, Y. And if we join this, we can say R, and what's R? R is root of X square plus Y square. We can say. And magnetic field, right hand से magnetic field की direction, we have to use the right hand to find the direction of magnetic field. Direction of magnetic field. Now we put the magnetic field, thumb along the direction of current. Then the direction of magnetic field is perpendicular to this, means the magnetic field is like this, and this, see here, this angle is supposed to be theta, right? This distance is r, then this angle is also theta. What is the value of magnetic field? So B is mu naught upon 2 I upon R, and this is the infinite wire, infinite long, so mu naught upon 2 pi I upon R. This is the direction of magnetic field. Now we can resolve. This magnetic field is B cos theta, and this magnetic field is B sin theta. What is sin theta here? This distance is xy, so this is x and this one is y. Now you can say sin theta. Sin theta is perpendicular upon hypotenuse, so this is y upon r. Cos theta base upon hypotenuse, so that is x upon r. So you have
y upon r, you have x upon r. So b sin theta, this direction is, this b sin theta is along x axis, so it has I cap, and this one is minus j cap but in negative direction. So j cap negative होगा, x cap I cap पॉजिटिव होगा, j cap नेगेटिव होना चाहिए, ये नहीं है, j कैप नेगेटिव होना चाहिए, ये नहीं है, ये हो सकता है. अच्छा, दूसरा जुगाड़ भी देख सकते हैं. इफ दिस पॉइंट इज हियर, मींस x कोऑर्डिनेट इज 0. इफ x कोऑर्डिनेट इज 0, डायरेक्शन इज प्योरली इन y डायरेक्शन, सॉरी पॉजिटिव x डायरेक्शन. सो पुट x इज इक्वल टू 0, x is equal to 0, direction is j, not possible. X is equal to 0, direction is minus I cap means near, not possible. X is equal to 0, minus j cap, not possible. X is equal to 0, direction is purely, x is equal to 0, direction is I cap. So this could be the answer. But here we can say calculation B is equal to B sin theta I cap minus this one B cos theta j cap, and sin theta is y upon r, means y I cap. Cos theta x upon r यानी x j cap. And B is common, and what's B here? B is mu naught upon 2 pi I upon r. R is this. So the correct answer is A. Got it? Very good question. Nice. So again move forward. Another very easy question. Just we have to tackle it by direction of magnetic field. So direction of magnetic field is, see here, two long parallel wires, suppose in z direction, and direction is outward. This is the direction of current. यहां से direction of current outward, so magnetic field in this region upward. Direction of current outward, so here the magnetic field region, magnetic field inward. So if these currents are equal, at the midpoint the magnetic field is equal in magnitude but opposite in direction. If it is opposite in direction, then definitely बीच में magnetic field 0 होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा तो इस ऑप्शन को हम और इस ऑप्शन को हटा सकते हैं. ऑप्शन ये हो सकता है या ये हो सकता है, राइट? अब अगर हम देखें इस साइड में, नाउ राइट हैंड फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, the distance is very small, r is very small, so this distance is very small, so magnetic field is very large. And for this one is also upward direction, so if magnetic field is upward direction and this direction is shown by positive, so here the magnetic field should be like this. So the correct option is this, and here the magnetic field is inward, that means downward, which is not possible. So the correct option is B. Got it? That's a very easy question. चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन. सी हियर वी हैव a loop, right? And there is a current. This is the center, and current is going from here. This is the center. This angle is supposed to be theta, and this angle is also supposed to be 180. This is 360, and this is 2 pi minus theta, we can say.
right? Now, what will happen? If current goes here, then some current goes like this, I1, and some current goes like this, I2. And what we have to find? We have to find the magnetic field at the center. So सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको क्या करना होगा? सेंटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस I1 की वजह से देखेंगे. I1 current is here. For I1 the magnetic field is V1, which is inward. For I2 the direction is of current is like this. So magnetic field is suppose V2 and V2 is outward. Right? Both the magnetic field at the center due to both arcs are in opposite direction. Right? So what is the magnetic field due to a single arc? The formula is B is equal to mu naught upon 4 pi I upon R into alpha, and that alpha should be in radian. अल्फा हमेशा रेडियन में होना चाहिए इस फॉर्मूले के लिए. सो नाउ अगर हम इस I1 को देखें, सो दिस I1 विल डिस्ट्रीब्यूट हियर. सपोज दिस सेक्शन हैज रेजिस्टेंस ओनली R1 and this section has resistance only R2, and you know that I1 is inversely proportional to R. But R is directly proportional to L. Resistance is directly proportional to length of the wire. R is equal to L upon A. That is the formula for the resistance. If R is proportional to L, then here you can say L angle is equal to arc upon radius. So L is equal to R into theta, means L we can say proportional to theta. If L proportional to theta, then R is also proportional to theta. Which theta? This angle theta and this angle theta. If R is proportional to theta, so here we can say I1 is proportional to 1 upon theta. And now we can say I into theta is equal to constant. And for these two, I into angle if constant, it means the magnetic field due to this and magnetic field due to this are equal. आप यहां पर थीटा कम करोगे तो करंट बढ़ जाएगी, थीटा बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगी. मींस I into थीटा एंगल ऑफ सब्सटेंस जो भी सब्सटेंड कर रहा है आर्क, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. And if it always remains constant, it means I into theta constant. So whatever the value of theta, theta की वैल्यू कुछ भी हो, 90 हो, 180 हो, 0 हो, हमेशा ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इक्वल रहेंगी. और इक्वल रहेंगी इसका मतलब क्या है? अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगी, यानी नेट फील्ड हमेशा 0 रहेगी फॉर every value of theta. So the answer is 0 for all values of theta. Got it? तो चलिए, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था. आगे बढ़ते हैं. दो सोलेनॉइड and we have to find the force in between them. Means one solenoid is like this and another solenoid is coaxial of this one, that is like this. So you know the magnetic field due to this solenoid on this is very very small or almost zero, so there is no force. But the magnetic field due to this solenoid is in axial direction, right? अब इसको क्रॉस सेक्शन अगर आप इधर से देखो, आपकी आई यहां पे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां है like this, and you have the loop or current carrying loop of solenoids like this. So all the forces are exactly opposite to each other, every diametrical opposite force.
So they will cancel each other and net force on this is also 0. So what should be the answer? Magnetic force on the outer solenoid due to the inner one and on the inner solenoid due to the outer one, both are 0. So the answer is F1 is equal to F2 is equal to 0. So this is also a very easy question, but it requires your concentration. Another good question, maybe you can solve, or maybe you already have solved it, but the conceptual part is this. There is a wire, a small per unit length lambda mass wire is here, and current, suppose in opposite direction, then only they can repel. If they repel each other, then the magnetic force is here, and this angle is given as theta. The mg gravitational force is here, and the tension T is also here. If this angle is theta, so this angle is also theta. And if theta is here, then this is T cos theta, and here we can say T sin theta. Now what will happen? T sin theta will balance magnetic force. And what is the magnetic force? Magnetic force is mu naught. Per unit length force is mu naught upon 2 pi. I1 I2 means I1 into I2. I and I both currents are same. So I into I is equal to I square. I upon D. What is D here? See, this length is L. So this length is L sin theta, and this also L sin theta. So here 2L sin theta. Got it? Right. And T cos theta is now balanced by, yes, mg. And if here we take length unity, we are taking length L is equal to 1 meter. That's why this is the force per unit length, and here mass per unit length is lambda. So we can put lambda later on. So we have lambda g. Now we can divide these two equations, and we have tan theta is equal to mu naught I square divided by 2 pi 2L sin theta. And if we divide it, then we have lambda into g. Now tan theta can be written as sin theta divided by cos theta. And when sin theta goes here, you have sin square theta. By equating these two, we can easily find the value of I, and the value of I will be this, and this is your answer A. So these are the some questions, छोटे-छोटे questions थे जिसमें थोड़ा सा conceptual part था. In conceptual part को you have to use, right? And okay, आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, and we'll meet in next session with the topic. That topic will be EMI, means electromagnetic induction. So we'll meet tomorrow again, and also don't forget to subscribe the channel, press the bell icon, and also share to your friend so that all other students are also get benefited. Okay, bye bye.